हैज टू बी पेड. सो जनरली वो $200-300 लेके वो टाइम पीरियड देके दे थ्रेटन देम एंड गेट द प्री ऑर्डर्ड आइटम कैंसिल. Okay, too, for confirming that in the pre-ordered item है, so they have a banker, somebody, another person in the fake call center who अपने आप नु banker कह के वो call transfer हो जाती है. So he becomes a banker. So they already have the information within database. So वो banker also confirms that कि हाँ from your account this is a pre-ordered item which is illegal. On that basis, then the whoever that individual is like compelled to cancel the for cancellation they have to pay an amount, a certain amount, $200-300, and that amount is taken either in a cash app or as Amazon gift card. So they purchase an Amazon gift card, and immediately the Amazon gift card, there's a number which is informed to the kingpin. They read in the amount immediately. The second fraud that they do is payday fraud. So payday fraud de which they target that particular group who have low credit score. So unno normally bank ke through loan milna nahi hai. So they contact that particular group because they have a software which data mines and gives them that group. So they contact them and they tell and lure them saying that they will be given a low interest loan. So low interest loan despite their poor credit rating. So then इनके लिए इस लोन वास्ते कुछ charges लगना है. So out of they lure them into this thing, into the trap, and then make them purchase again Amazon gift cards. So once again the same thing, the Amazon gift card is immediately the number is shared with the kingpin and who read in the amount. इनकी third है Microsoft fraud. So Microsoft fraud में what happened on their systems when there's a pop-up that comes up which says that कि आप थोड़ा your system is compromised. That means that we are able to view the screen. So immediately contact. There's a number there. Immediately contact this number. So when they contact the number, they pretend to be Microsoft Customer Care. So customer care. So customer care तो उन्होंने कहना कि that आपकी ये हो गया. So आप will send you a link. So with that link you can with that link you can run it in your computer to protect it from being compromised. So once the link is immediately downloaded, so the complete system gets compromised now. Now they had installed their app. So it looks into the system and collects the details of their bank accounts and all. And immediately whoever is the caller, the fake call center caller, is able to view into their system. So then the bank details and all are got, and from the bank details the money is immediately wire transferred to mule accounts in the US itself. So that means कि the call centers here have some partners in the US. So from mule accounts, the money is immediately withdrawn through ATMs. So the person who is withdrawing, वो अब कुछ commission रख के दूसरा पैसा इतने kingpins नो through हवाला they send the money. So these are 3 or 4 modus operandi of these call centers. So ये call centers ना the F88 call center जो चल रही सीगा, the fake call center, there are 72 employees और 2 साल से इतों चल रही है. And the other call center जो ये नवी बनी है, this is in A1 Towers. Here there are 83 employees. This was started in February 2024. Actually, when we developed this information, sanu information सिगा कि that lot of call centers which were fake call centers जो बाहर they were in Delhi and other places, they have shifted to Mohali, Jirakpur and Karad area. So we had information, and it was sort of lot of efforts by our team, our cybercrime team. Then we were able to zero in on the locations and identify. It was very difficult even to identify. And these call centers usually run during the night time. This is from. मैम इसमें जो लोग काम करते थे वो एजुकेटेड थे या फिर किस तरीके से
करते थे पूरा काम? They are all educated. They are all educated from the 155. Most of them seem to be from Gujarat. They are Gujaratis, and and of course and northeast se log hai. So basically they are given a script. We found in our recoveries we also found scripts. Those scripts na, to train them ki how to talk to the customer in the US. टोटल ओवरऑल कितने मनी है हवाला सबके ओवरऑल कितनी अमाउंट ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ See, this is part of the investigation. Asi na. अल्टीमेटली मैम 400 करोड़ नहीं that I can't give this one because 2 साल तो चल रहे. We had a huge recovery. It will take us some time to come get to know. रन करने वाले लोकल ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਕੋਈ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਵਾਈਟ ਕੋਲਰ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕ मास्टरमाइंड ਹੁਣ वाले जो इंट्रोगेशन तो पता लगा ये गुजरात तो हैं. So ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ they are the managers of the whole thing. Who are further kingpins? We have to go into it. But these are the managers are Gujarati. Most of the call takers, जो थे employees हैगा, they are all Gujaratis. ਇੱਕ ਸਾਲ ਆਲਮੋਸਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ इथों 2 साल तो चल रही सीगा. एक जगह 2 साल तो चल रही सी. दूजा जो A1 टावर्स रीसेंट है फरवरी तो शुरू हुई. इन्वेस्टिगेशन में कुछ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ दिस इज ऑल हुन इन्वेस्टिगेशन. वो तो ये इट्स अ प्रोसेस. इट जस्ट बिगन. इट्स अ ह्यूज. इन्वेस्टिगेशन में कुछ आया कि कितने लोग इनकी ठगी का शिकार बने, क्योंकि आपने 3-4 मोडस ऑपरेंडी जो कि आजकल बहुत आप लोग लगातार अवेयर भी करते हैं, चाहे वो कॉपी टैक्स So करके see, लिंक भेज कर with preliminary investigations, जो our inspectors were, we were like so tied up. 155 arrests, 155 arrests. The procedure is it's a huge, बहुत सारा procedures करना है. But from preliminary investigation, what we got to know that the server makes 1.5 calls. जितने ना कंप्यूटर से एक कॉल सेंटर से ना 1.5 one day. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ one call is repeatedly done. Somebody picks up ना, जैसे ਸਾਨੂੰ भी बहुत calls आंदी है. यानी ਇਹਨੂੰ टारगेट ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਮ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਸਰਵਰਸ ਦੀ ਕਾਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ. 1.5 ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕੀ हाँ 1.5 lakh. I mean 1.5 lakh people were targeted in one night. One night, right? ਓਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਉਹ ਸਰਵਰ ਵੀ ਹੈ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. हाँ. ਸਰਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮਲਟੀਪਲ ਕਾਲਸ. ਸੋ ਉਹ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਚੱਕ ਲਈ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਲਈ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ. मैम So it is a मास्टरमाइंड process. पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि नहीं, ये नहीं, बहुत बड़ा नेक्सस है. yeah, mastermind was not present and at that moment वो 3-4 दिन पहले ही निकल गया कहते गुजरात. So the day हमारी रेट सीगा 1459. That day he was not there, but the employees जिन्ना सीगा सारा नु राउंड अप किया. From interrogation we got to know this. ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ No, different. ਗੁਜਰਾਤੀ ਮੈਡਮ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ It will be through the it's just preliminary. No, we have no idea. We have investigations are in progress. मैम ये जो दो कॉल सेंटर्स हैं इनका आपस में कोई लिंक है, और क्योंकि दोनों की मोडस ऑपरेंडी सेम थी जैसे आपने बताया, एक एमेजन गिफ्ट हो गया, एक कॉपी डेस्क हो गया, एक बैंकर्स बन के एक द माइक्रोस्कोप फ्रॉड वाज फॉर द A1 टावर्स ना. A1 टावर्स द हाँ वही ना जो ਮੈਡਮ ਬੜੀ ਹਾਈ ਟੈਕ ਠੱਗੀ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ ਕੇ शेयर नहीं करोगे ऐसी लोगों में aware नहीं कराना जरूर चाहिए। दूजा और एक नहीं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी करेंगे व्हेन वी गेट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन. दिस इज एन इनिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस जस्ट टू से दैट कि ये 15 ਨੂੰ अर्ली आवर्स ਚ ਹੋਈ ਸੀਗਾ. ਦਮ ਪੂਰਾ 15 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ यही एक्सरसाइज चल रही. all the arrest and everything. बड़ा प्यासा मैडम 2 दिन हो No, these people target only US citizens. These fake call centers are target only US citizens, not from India. Data is provided. They have brokers who provide data. See, like I have told you, mule accounts in which money gets transferred. Mule accounts US ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ. So mule accounts ਤੋਂ immediately through ATM the money is withdrawn. That means there is ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ there is ਜਿਹੜੇ a 155 लोकल वाले सारे ਉੱਥੇ ਦੀ US US ਸਾਰੇ US ਜਿਹੜੇ 155 ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ हैं
ਇਹ ਲੋਕਲ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੱਥੇ? They're not local. They're all Gujarati employees mostly, and Northeast also. Some were Gujarat, some from Northeast. ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਦਾ? So we had source information siga, and we developed on based on it. ਇਹ ਬੜਾ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 दिन से लगातार टीम आपकी रेट पर थी उसी कॉल सेंटर? It's source information, and besides, from last 1 month we knew that there was lot of pressure, so lot of fake call centers had moved to this side. Ma'am, out of 155 were everyone aware कि वो fraud कर रहे हैं? Yes, everybody were aware. We were absolutely checked because they were given scripts. They had to learn and then how to talk, and they knew कि ये जो काम कर रहे हैं ये fraud कर रहे हैं लोग. ਜਿਹਨੇ ਕਾਲ ਚੱਕ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਫਰਾਡ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। नहीं, जनरली समटाइम्स पीपल ना, जैसे मैनू भी कॉल आती है, मैनू पता है, देन आई जस्ट डिस्कनेक्ट द फोन. सो सम पीपल नो दैट दिस इज अ स्कैम कॉल, तो दे डिस्कनेक्ट कर दिया. सम पीपल ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਈਆਂ ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਲੱਗ ਤੋਂ ਮੈਂ नहीं, this is in US ना, the whole जो टारगेटेड ग्रुप इज US. ਲੋਕਲ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ कोई है ही नहीं थे, एवरीबडी देयर टारगेट इज US. यूएस से आपको कोई जानकारी मिली हो? No, no, no. हमने वहाँ दी हो वहाँ पे कोई? नहीं, इट्स जस्ट द बिगिनिंग. ये तो टुडे इज व्हाट 17, कल 15. वी विल डू इट, वी विल फॉलो ऑल, वी विल इन्फॉर्म, वी विल डू फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन प्रोग्रेस. ਜਿਹੜੇ 155 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਿਆ That 20 to 30 in young group है. ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਮ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ EMPLOYEE ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ EMPLOYEE ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ बट देन एम्प्लॉय ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫਰਾਡ ਹੈ. देन they were what they are doing. ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਬਣ ਗਏ. ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਯੂ ਆਰ ਐਨ Amazon ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, nor you have anything to do paid. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ. हाँ, we have ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਠੱਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 155 ਲੋਕ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ. yeah, training, yeah, their training is given na. We got recovered scripts from the during our raids na. मैम, क्योंकि साइबर ठगी का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, हालांकि आप लोगों की तरफ से बार बार लोगों को अवेयर किया जाता है, और इस तरह का लोन पेमेंट या फिर क्लिक करके कोई भी लिंक पर किया, आपका सारा डाटा जो है वो फ्रॉडस्टर के पास चला जाएगा. किस तरह से लोगों को अवेयर कर रहे हैं इस तरह की जो कॉल्स आती हैं, क्योंकि पिछले दिनों में काफी ज्यादा इस तरह की शिकायतें, लोग ठगी का शिकार. You must be aware na, national helpline 1930 चल रही है. Even we have it here. So we have been continuously, posting it in our all social media platforms. और मेरे ऑफिस के बाहर भी तुसी किसी time you had gone, you should see that there is this board saying 1930 in case you are a victim.